Hello dear students, welcome to this video. Today we will discuss a very important topic, geological time scale or geological timetable, which is very important from the point of view of geological sciences as well as the students of botany and the students of fossil studies. This topic is specially designed for BSc third semester students. Let us start this topic. In the beginning, I would like to tell you what do we mean by geological time scale or geological timetable. The events, important events, major events which occurred during the evolution of life on Earth. They are arranged in chronological sequence, and this sequence is known as geological timetable. The different events from the start of life on earth. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि धरती का बनना जो एक घटना जो थी वो लगभग 4500 मिलियन ईयर्स, लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई है. एंड दिस एज ऑफ अर्थ इज कैलकुलेटेड फ्रॉम डिफरेंट डाटा लाइक रेडियोमेट्री, एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, फॉसिल रिकॉर्ड्स by the works of a large number of experts from geophysics, geochemistry and biology. And the earth is estimated to have arisen around 4500 million years ago. The history of earth's life is divided in variable time intervals. Please note variable time intervals. ये intervals fix length के नहीं हैं, क्योंकि हर एक इंटरवल की शुरुआत या एंड किसी खास इवेंट की वजह से हुआ है. जैसे ही कोई खास मेगा एक्सटिंक्शन या कोई और इवेंट हुआ है तो ये मान लिया गया है कि एक टाइम फेज़ ख़त्म हुआ और अगला फेज़ शुरू हुआ, और ये बिल्कुल भी रेगुलर नहीं है. इनके बीच में जो गैप्स हैं वो बिल्कुल ही अनफिक्स्ड हैं. आप उनको एक जैसा कभी नहीं मान सकते. ये जो जियोलॉजिकल टाइम टेबल है, ये सबसे पहले जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है वो 1913 में पब्लिश हुआ था. आर्थर होम्स ने पब्लिश किया था, जो कि एक ब्रिटिश जियोलॉजी के साइंटिस्ट हुए हैं. हम धीरे धीरे देखते हैं कि इस जियोलॉजिकल टाइम टेबल में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस धरती को टाइम फ्रेम में अगर हमें बांटना हो इस धरती की हिस्ट्री को, तो इसको नापने की जो यूनिट है सबसे बड़ी, दैट इज़ ईओन. ईओन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज सबसे बड़ी यूनिट यही है. हालांकि सुपर ईओन भी कहीं ना कहीं पढ़ने को आपको मिल सकता है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट इवेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम है, जो एक फ़ेज़ है, टाइम की एक इकाई है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, उसको बोलते हैं ईओन. ईओन को आगे डिवाइड किया गया है बहुत सारे ईराज में. ईराज भी एक बहुत बड़ा लंबा टाइम होता है. इन ईराज को फर्दर अगर डिवाइड करें तो ये पीरियड्स बनते हैं. पीरियड्स को आगे डिवाइड किया गया है इपॉक्स में, और इपॉक्स को फर्दर डिवाइड किया गया है एजेस में. ये इसके टाइम फ्रेम के अलग अलग एलिमेंट्स हैं, आप याद रखें इनको. ईओन्स सबसे बड़े, फिर ईराज हैं, फिर पीरियड्स हैं, फिर इपॉक्स हैं, फिर एजेस हैं. कुल मिलाकर जो धरती की जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, इसके दो बड़े ईओन्स बनाए गए हैं. एक ईओन का नाम है क्रिप्टोजोइक ईओन और दूसरे ईओन का नाम है फेनेरोजोइक ईओन. क्रिप्टोजोइक एंड फेनेरोजोइक, आपने ये वर्ड्स प्लांट में भी सुने होंगे. जैसे कुछ प्लांट्स को हम क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं, कुछ को फेनेरोगैम्स बोलते हैं. क्रिप्टोगैम्स का मतलब है हिडन गैमेट्स. यहाँ पे क्रिप्टोजोइक का मतलब है हिडन लाइफ और फेनेरोजोइक का मतलब है
एविडेंट और विजिबल लाइफ। इन दोनों इयोन्स को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है तीन तीन ईराज में। हर एक इयोन की फर्दर डिवीज़न 3 ईराज में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि धरती की शुरुआत 4500 मिलियन ईयर्स या 4600 मिलियन ईयर्स पहले, कहीं लिखा मिल सकता है आपको, 4500 या 4600 मिलियन ईयर्स पहले धरती की शुरुआत हुई। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया लगभग 541 मिलियन ईयर्स तक धरती पर लाइफ ना के बराबर थी। इसलिए इस पीरियड को क्रिप्टोजोइक इयोन कहा जाता है। और इस इयोन के बाद एक नया पीरियड शुरू हुआ, एक नया टाइम फेज शुरू हुआ, जिसको बोलते हैं फनेरोजोइक इयोन। दोनों के नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं। क्रिप्टोजोइक मीन्स हिडन लाइफ, फनेरोजोइक मीन्स एविडेंट लाइफ। और दोनों ही इयोन्स के आगे फर्दर डिवीजन्स 3 आप देख रहे हैं यहाँ पे। हम इनको थोड़ा सा आगे और डिटेल में देखेंगे। आगे चलते हैं। तो क्रिप्टोजोइक इयोन की अगर हम बात करें तो इसका जो टाइम फ्रेम है धरती के बनने से लेकर, यानी कि 4.5 बिलियन ईयर्स से लेकर और 541 मिलियन ईयर्स तक ये रहा है इसका फ्रेम, टाइम फ्रेम। और इस टाइम फ्रेम को, इस पूरे इयोन को एक और नाम से भी जाना जाता है और वो है प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन क्यों कहते हैं प्री कैम्ब्रियन, ये आपको आगे पता चल जाएगा कि इसको प्री कैम्ब्रियन क्यों कहा जाता है। ये बात ज़रूर नोट करने की है कि ये जो ड्यूरेशन रहा है ये बहुत लंबा था। और आज धरती पर जितनी लाइफ इवॉल्व हुई है, अगर हम सारी टोटल हिस्ट्री को देखें तो क्रिप्टोजोइक इयोन 80% से भी ज़्यादा जो टाइम अब तक का है वो इसी इयोन ने लिया है। और इस इयोन को हिडन लाइफ इयोन बोलते हैं। हिडन लाइफ क्यों बोलते हैं हिडन लाइफ? क्योंकि इस पूरे टाइम का फॉसिल रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं है। उसकी वजह क्या रही होगी कि इस पीरियड में लाइफ या तो थी ही नहीं। जब 4500 मिलियन ईयर पहले जब धरती बनी है तो क्योंकि ये सूरज से टूटकर धरती का टुकड़ा बना है जैसा साइंस मानती है, और इसमें बहुत टाइम लगा इसको ठंडा होने में, बहुत लंबा टाइम इसको ठंडा होने में लगा। फिर इसकी जो क्रस्ट है वो धीरे धीरे बननी शुरू हुई, सॉलिडिफाई होनी शुरू हुई, ओशियंस बनने शुरू हुए, कॉन्टिनेंट्स बनने शुरू हुए, माउंटेन्स बनने शुरू हुए। और इस पूरे पीरियड में लाइफ के सिग्नल्स धरती पे नहीं थे। और इसके जो 3 इरा हैं इनको हम आगे और डिटेल में देखेंगे। हम अभी यहीं तक ध्यान रखें, ऊपर हम नहीं देख रहे, आगे हम इन इयोन्स की बात करेंगे। तो 4500 मिलियन ईयर से शुरू होकर 541 मिलियन ईयर तक ये इयोन रहा है। आप देख सकते हैं 4500 500 लगभग 4000 मिलियन ईयर्स का समय बनता है। ये बहुत लंबा समय है। और यहाँ पे सिर्फ अभी ये 500 मिलियन ईयर से ही, 541 मिलियन ईयर से ही ये नए वाला इयोन चल रहा है। अगर हम क्रिप्टोजोइक इयोन के तीनों इराज की डिटेल में बात करें, जैसा हम पहले कह चुके हैं कि धरती की शुरुआत यानी कि 4500 मिलियन ईयर पहले शुरू होके और 541 मिलियन ईयर्स तक इसका ड्यूरेशन रहा है। इसको 3 इराज में डिवाइड किया गया है। पहले इरा का नाम एजोइक, आप यहाँ नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं एजोइक का क्या मतलब है। एजोइक का मीनिंग है लाइफ के बिना। बहुत जगह आपको इसका ये नाम लिखा हुआ भी मिल जाएगा, हेडियन। तो दिस पीरियड एक्सटेंडेड फ्रॉम 4500 मिलियन ईयर्स अप टू 2650 मिलियन ईयर्स अगो। इतने पीरियड तक, इतने लंबे पीरियड तक ये एजोइक इरा रहा। इस पूरे पीरियड में देयर वाज नो लाइफ बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ वाज वेरी हाई। दिस वाज फॉलोड बाई a time which was known as Archeozoic era or Middle Precambrian. Please note this word Precambrian. Precambrian. This Azoic era is also known as Early Precambrian.
and this Archeozoic era is known as मिडल प्रीकैम्ब्रियन, जिसका टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं 2650 पे ये ख़त्म हुआ था। 2650 मिलियन ईयर से लेके 1850 मिलियन ईयर तक ये इरा चला है। और इस इरा में बहुत ही प्रिमिटिव लाइफ बननी शुरू हुई, बहुत ही सिंपल लाइफ। अभी लाइफ के सिग्नल्स धरती पे मिलने शुरू हुए थे। जो तीसरा इरा इस इयोन का था, उस इरा का नाम प्रोटेरोजोइक इरा, और इसको दूसरे शब्दों में ये कहा जाता है लेट प्री कैम्ब्रियन। ये प्री कैम्ब्रियन क्यों हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो अगला इयोन आएगा उसका जो पहला इरा है उस इरा का नाम कैम्ब्रियन है। तो हमें इसलिए उस आपको कैम्ब्रियन नाम आगे मिलेगा, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि इसको अर्ली प्री कैम्ब्रियन, इसको मिडल प्री कैम्ब्रियन और इसको लेट प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं। तो दिस प्रोटेरोजोइक इरा एक्सटेंडेड फ्रॉम दिस टू दिस 1850 से लेके 541 मिलियन ईयर्स तक इसका ड्यूरेशन रहा। और इस टाइम पर बहुत सिंपल ही प्रिमिटिव लाइफ की फॉर्म्स एग्जिस्ट करती रही, और ज़्यादातर ये लाइफ की फॉर्म्स पानी में थी। अब हम दूसरे इरा की इयोन की बात करते हैं। दूसरा इयोन यानी कि जो रीसेंट इयोन है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, उसका नाम जैसे हम पहले देख चुके हैं फेनेरोजोइक इयोन। इट स्टार्टेड फ्रॉम 541 मिलियन ईयर्स एंड इट इज़ कंटिन्यूइंग टिल नाउ। तो आज अगर हम इयोन की बात करें, आज कौन सा इयोन है, तो आज के इयोन का नाम है फेनेरोजोइक इयोन। तो इट इज़ a recent eon in geological time scale, and if we consider the time span, if we look at the time span, it forms less than 20% of total geological time of Earth, less than 20%. You have seen that Cryptozoic eon extends from more than 80% of time, and this eon forms less than 20% of total geological time of Earth. This eon is known as evident life eon because the life signals on this Earth are very clear of this period. The fossil record is visible. The plant and animal life started evolving. The plant and animal life began to evolve. द एनवायरमेंटल कंडीशंस, धरती पहले बहुत गर्म थी, धीरे धीरे क्योंकि लाइफ उस पर आ गई है तो लाइफ आने की वजह से एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो गई, और द कंडीशंस बिकेम मोर कंड्यूसिव फॉर लाइफ। यू कैन सी दिस इयोन स्टार्टेड फ्रॉम 541 मिलियन ईयर्स and it extended to the present period. Now it is going on, this eon is going on. We will see the details of this eon. This eon is again divided in 3 eras. Like Cryptozoic eon, this is also divided in 3 eras. The first one was known as Paleozoic era. It is also called era of ancient plant and animal life, which extended from 541 to 252 million years ago. The fossils of this period are easily recognizable. That is why it is known as, this eon is known as Phanerozoic eon. The next era of Phanerozoic eon was Mesozoic era, which was also known as Age of Reptiles. It extended from 252 million years to 65 million years, or some say it is 66 million years. During this time period, the dinosaurs, pterosaurs and other giant reptiles, they dominated the surface of Earth. The ancient plants were replaced by conifers, cycads, gingoales. These are all gymnosperms and some primitive angiosperms.
The latest era of this geological time scale is Cenozoic era, which started from 65 million years back and it is continuing till date, and this is the recent era of geological timetable. The great reptiles which dominated the earth in Mesozoic, they were replaced by birds and mammals. The dinosaurs and pterosaurs, they were extinct. The gymnosperms which you have seen here, they were dominant. The gymnosperms declined and the flowering plants started dominating. Let us now take up all these eras in details, because the details of these eras are available in the fossil records. In the Cryptozoic eon, the details are not available, fossils are not available, but here the fossils are available. That is why the details are available, and we will see one by one. So first we start with the Paleozoic era of Phanerozoic eon. This era is further divided into six periods, and the name of each period is taken after the name of a place, name of a person or people, or the specific features of the region of discovery, some specific features of geology of the region of discovery. This era started from 541 million years back and it extended till 252 million years, this Paleozoic. The first period of this era was Cambrian. So now I think you remember the name Precambrian. Why that was Precambrian? Because here is the Cambrian. Before that they were Precambrian. So this Precambrian period, the Cambrian name was taken from the Roman name of Wales. Wales is the name of a place and its Roman equivalent is Cambrian. This period was named from the name of this place. Second period is Ordovician, and the name was taken from the name of a tribal community, Ordovices, which lived in North Wales. The next period was Silurian. The name is derived from Siluris, which was an ancient tribal community of Britain. Now we come to next, this Devonian period of Paleozoic era. This Devonian period was named after Devonshire, which is again a place in England. Next period was Carboniferous. This name carbon comes from coal. The coal was abundant in the rocks of that period, and that is why this period was named as Carboniferous. And some workers have divided this period into two sub-periods, Mississippian and Pennsylvanian. The last period of this Paleozoic era was Permian, which was named after the name Perm, which is the name of an ancient kingdom of Russia. So now take up the next era of Phanerozoic eon, second Mesozoic era, which started after the end of Paleozoic, and this era extended from 252 million years up to 66. Some say it is 65. It is 65 or 66 million years, this Mesozoic, and it is divided into three periods. Again, the name of a period is taken from the name of a place, name of a group of people, or some specific features of a region of discovery. The name
Cretaceous is derived from Creta. This Creta word is the Latin name for chalk. The English canal, the both sides of English canal were full with the deposits of chalk of this period. That is why this period of Mesozoic was known as Cretaceous. Before Cretaceous, the period was Jurassic, and Jurassic period, you must be knowing that this period was famous for great reptiles. You must have heard the name of movies like Jurassic Park, where dinosaurs are pictured. The dinosaurs were dominant during this period, and the name is derived from the name of a mountain range, which is Jura. And this Mesozoic era started from Triassic, and this name is derived from the rocks of that period, which showed 3 layers, and they were found in Germany and other parts of Europe. Actually, this started from this is the oldest, and this was the recent time of this era. The first period was Triassic, it was followed by Jurassic, and then Cretaceous. The great dinosaurs, the reptiles, were dominant during this period, and they almost disappeared before Cretaceous. The last era of Phanerozoic Eon is known as Cenozoic era, and this last era is again divided into 3 periods and is also known as Age of Mammals. The present times which are going on, it is the Age of Mammals, also known as Age of Flowering Plants. So this era is divided into 3 periods. You may see some differences here with other workers. So it started around 66 million years ago or 65 million years ago, and it is continuing till date. It started with Paleogene and it ended at Quaternary. The Quaternary is divided into Pleistocene and Holocene epochs. This is important word. The periods are again divided into epochs, and epochs are divided into ages. This Neogene is divided into Miocene and Pliocene epochs, and this Paleogene, if we start from oldest, it started with Paleocene, then Eocene and Oligocene. If we start from here, from this place, so it was first Paleocene, then Eocene, then Oligocene, then Neogene started with Miocene and Pliocene, and Quaternary started with Pleistocene, and the most recent epoch is Holocene, which is going on now. This is very interesting slide. This is very interesting picture from internet, and this shows the journey of life on Earth. The journey is really very, very long. You can see the Earth was formed around 4600 million years, and up to this was a very long period. Up to this, it was almost a lifeless. This period was longer than the above period, but because it was no life, there was no life, so it is shown here in a very short period of time. So this was known as, from this to this place, it was known as Cryptozoic, and it extended up to 542 million years. And this entire time, from this up to this recent time, it is Phanerozoic, as we have seen earlier. You can see here, this is the era. Paleozoic started from this place,
When Paleozoic ended, there was a mass extinction. That is why these periods have changed. This era changed, and from this place up to this, it is Mesozoic. Again, there was a big extinction, and the era changed. Era was changed. Now this entered into Cenozoic, which you can see here the reptiles, big reptiles. They have, this is Pterosaurus, which is flying away. It has gone away, and now this Paleocene, Eocene, Oligocene, Miocene, Pliocene, Pleistocene, and Holocene, these are different epochs. So you can see this interesting journey of life on Earth. Again, when we see the time distribution, it is very interesting to note that Earth originated around 4600 million years or 4500 million years. From this period onwards, this and Proterozoic, they all come under Precambrian, or you can say it is Cryptozoic Eon, and this consumed around 87% of total geological time. And this eon, the Phanerozoic eon, started from this time frame, and it included this Paleozoic, Mesozoic, and Cenozoic era. This was the 4 to 6, 4, 5 and 6. They constituted a very smaller portion of the total geological time on Earth. You can see this. The life in fact started very late and quite recently if we see this time. But that recent was also as old as 544 million years ago. So we can conclude by a few lines. The fossil record of life mostly comes from three eras of Phanerozoic Eon. There are no evidences of life during Cryptozoic Eon. The Paleozoic, which was known as Old Life era, it started the four-limbed vertebrates. The land plants originated during this time. The Mesozoic, which is also known as Middle Life, this was the era which was mainly the age of dinosaurs. Although there were mammals and flowering plants, they started appearing, but it was primarily the age of dinosaurs. Cenozoic, which is known as New Life era, it is the age of mammals or the age of flowering plants, and this is the era during which we live today. And now you should note one more word here. You may be asked any question like this: what is Anthropocene? There are some geologists who think that this quaternary epoch is changed due to the activities of human beings. They are affecting the life on Earth. Human beings are affecting the life on Earth. That is why a youngest epoch should be added to quaternary epoch, and that may be named as Anthropocene because it is due to the activities of human beings. So here we can see a conclusive slide. These three, they belong to Cryptozoic, the Hadean, Archeozoic, Proterozoic, and from here the Phanerozoic Eon started. These are known as Precambrian periods, and Cambrian started from this Cambrian, then Ordovician, then Silurian, then Devonian, then Carboniferous, then Permian in Paleozoic, then Triassic, Jurassic, Cretaceous in Mesozoic, then Paleogene, which is made up of these epochs: Paleocene, Eocene, Oligocene, Neogene of epochs Miocene, Pliocene, and Quaternary, which is the recent period, it is Pleistocene, and the recent epoch is Holocene. So thank you very much
for watching this video. For any questions, you may ask in the comments. Thank you very much.